So we studied about the zeroth law of thermodynamics, and to know the first law of thermodynamics, like three parameters are required. What are the three parameters? One is change in internal energy or internal energy, and second one is heat, and third one is work done. In तीनों का relationship only first law of thermodynamics are there. That's why we learn separately delta U and Q का formula and W का we have to learn. Okay, and delta U का formula याद है ना मानो? Delta U का formula is N NCV delta T. it does not depend on process, कभी भी CV only. And Q का formula, it depends on process. CP या CV या depends on the constant volume or constant pressure बोल के. Okay, N CP delta T, and in constant volume में दोनों का formula will be equal हो जाएगा, right? Constant volume में हाँ. चलो, now we will learn about the third parameter, that is work. वर्क के बारे में. एंड वर्क का बेसिक फॉर्मूला क्या है? टेल में व्हाट इज वर्क डन बाय द गैस में. देखो व्हेन ए गैस एक्सपांड कितना PdV. PdV. ओके, देखो when the gas expands or compresses, the force exerted by the gas on the surroundings or vice versa through a displacement causes the work. Suppose मान लो एक कंटेनर में this is a movable piston is there, a container is there, इसमें inside gas is there. Okay, suppose gas is pushing the piston. Gas is pushing the piston. It went to small displacement dx. मतलब gas is doing some work, right? So कितना वर्क किया? That small work done कितना है बोले तो we can use the formula, small work done का formula dw is equal to pdv. Okay, pdv small volume, right? अगर total work done चाहिए बोले तो we have to integrate both sides. After integrating we'll get W is equal to integral V1 to V2 PdV. This is right one. This one we have to use. Okay. आप P delta V use करने हो तो वो special case में आएगा P delta V normally. Okay. Like constant pressure में we'll use that one. But normally this is the right one. W is equal to integral V1 to V2 PdV is the formula for this one. Work done का. Yeah, sir, done. Yeah. कपड़ा. Sir, one No. minute. इसमें हाँ, इसमें साइन कन्वेंशंस यूज करना पड़ेगा आपको. साइन कन्वेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो प्लस माइनस में रॉन्ग हो जाएगा. Done, Yes. sir. No. Yeah. Now we'll use and integration is about area, right? Integration is about area. So area under PV graph represents work done. So whenever PV graph is given to you, that is very famous graph. Pressure and volume graph is given to you. If you find the area under the PV graph, it gives the work done. Integration is about area, right? Area gives the work done. Okay, चलो. Now देखो साइन कन्वेंशंस we have to use. साइन कन्वेंशंस क्या है? वर्क डन बाय द गैस. गैस ने कितना काम किया? If the gas is doing work, we should take the work done as positive. And when the work done on the gas, so हम लोग we are doing some work, that time we should take as negative. These sign conventions are important. Work done by the gas. Gas is doing work, which that is good, right, for us. That is positive work. If we have to do work on the gas, that time negative work we have to put. Why? Because if the gas is doing some work, volume will increase, right? If volume increases means final volume minus initial volume will be positive, work done will be positive. Okay. चलो. So this is a work done का कहानी है. So work done का फॉर्मूला आ गया ना? चलो ना करो. A system changes from P1, initially P1 V1 है pressure, volume here x axis में, y axis में PV, and it is changes to P2 V2. ऐसा state जा रहा है gas. He is asking what is the work done by the system. System में कितना काम किया? So since the given PV graph, you have to find the area under the graph to get the work done. Find करो.
and work done का units are joules. Say 12 into 10 to the power 5. Yes, 12 into 10 power 5. Area under the graph. ये कौन सा शेप आ रहा है मानो? Which shape you are getting? Trapezium shape. Yes, 1 second. हाँ फाइन करो. Mm, 4. Yeah, so 12 into 10 power 5. है चलो. Now work is a path function. Very important. It is a path function, not a state function. We will see state function क्या है, but path function means it depends on path. It depends on path. Suppose मान लो those functions that depends on the path taken by system during the process is known as path functions. Work and heat are path functions. मतलब suppose initially the gas state is here, the second state is here. If you go like this, and like this different path में if you go also, the work done is not same because it depends on path. Suppose मान लो the given first state, second state, I went like this, मतलब आपको gas state from one place to other place ऐसा गया. One more process, another process में ऐसा हो रहा है. Okay. Now y is a path function. That means if I go from here to here, the y is nothing but any physical quantity like work हो सकते हैं और heat हो सकते हैं. Different path में heat will be different. Different path में work is different because it is a path function. It is a path function. ये आपको पूरा न्यूमेरिकल्स में करने समय ये आएगा. एटलीस्ट दे विल नॉट आस्क पाथ फंक्शन क्या है बोल को, बट व्हेन यू आर डूइंग द न्यूमेरिकल्स में दैट टाइम यू विल अंडरस्टैंड ओहो व्हाई वेयर इट इज यूजफुल बोल के. स्टेट फंक्शन इज इंपॉर्टेंट. स्टेट फंक्शन इज डिपेंड डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ. इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट. Yes, sir. Right? Yeah. Now suppose मान लो work done in a cyclic process I want. Work done in suppose cyclic process में PV graph is given to you. PV graph is given to you. One cyclic process is there. Cyclic process मालूम है ना? Starting point again ending point will be same. Okay. Suppose this is a cyclic process. A B C D. ये process कैसा हो रहा है क्या वो टेंशन मत ले लो. Some gas में experiment में they are the initial pressure volume ऐसे change हो रहा है some certain process में. Okay. So they can give any graph anything. This is a cyclic process, right? Starting and initial point is same. In this में how to find the total work done by this cycle में कितना है बोले तो आपको work done कैसा आएगा? Simply work done is nothing but area of cycle find करो. Area of cycle. We'll get the total work done. Okay. Suppose I want only work done for AB process means क्या करेगा? Area under the graph AB find करेगा. Suppose I want only work done on CD. You will try to find the area under the CD graph. ऐसा इंडिविजुअल फाइंड करने से अच्छा सपोज कंप्लीट साइकिल का चाहिए बोले तो यू सिंपली फाइंड द एरिया अंडर द एरिया ऑफ द साइकिल फाइंड करने का. एरिया ऑफ द साइकिल फाइंड करके टोटल वर्क डन आ जाएगा. एंड आफ्टर पुटिंग इफ इट इज अ क्लॉकवाइज साइकिल है तो देन वर्क डन इज यू शुड टेक एज पॉजिटिव. वर्क डन इज पॉजिटिव. सपोज इट इज देखो इस एरोस दिखाएगा वो एरोस दिखाएगा. So you have to understand clockwise में you should take after finding the area you will put positive negative. If it is anti-clockwise cycle, okay, what done is
you take as negative. आंसर आने के बाद नेगेटिव लगाने का, that's it. This is where only when you find the you want to find the complete cycle का work done, then only this formula will use. समझ आ रहा है? चलो now देखें क्वेश्चंस. Yes, Prem. चलो करो, JEE Main क्वेश्चन करो and tell the answers. So 300. Don't by heart करो. One second. Yeah, so 300 half and yeah, area of triangle. The total work done by this process is nothing but area under the complete cycle. मतलब इसका कमांड क्या था, हाफ इंटू बेस. आया आपको क्वेश्चन? यस, मैं करो. So pressure and volume graph is given to you. The total work done by the gas from A to B and B to C. I don't want complete cycle का नहीं चाहिए अभी. A to B and B to C का cycle only I want the total work done. So do we need to convert the dyne per centimeter square into Newton per meter square? Yes, करने का. Sir, 800. ऑप्शन में नहीं है ना. Even I'm getting 800. So first, Okay, one minute. Options are given wrong. Yes, 800 is answer. so first you find the area of the triangle and then you have to do Yes. PdV. Sir, dyne to Newton conversion is what? You will tell me. One dyne is 10 power of 5, right? Unit. 2 नहीं Okay. है, 5. And hello. You can take one dyne per centimeter as 0.1 Newton per meter square. 0.1 Newton per meter square. मतलब 10 power minus 1 से multiply कर दो इसे. So isn't it into 10? Into 10 नहीं है, 10 power minus 1, right? Dyne to you're converting into Newton, right? Newton per meter square. That is into 10 power minus 1. Sir, dyne to Newton is 10 power 5. And then नहीं, centimeter dyne square to meter square centimeter is square को आगे meter square means whole square 10 है to the ना. power minus 4. हाँ, so ऊपर लेके गए तो 0.1 आएगा. कितना आंसर कितना है कृष्ण? एंड इधर ये पॉजिटिव वर्क है बिकॉज वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, राइट? एंड ये वाला नेगेटिव वर्क है, माइनस करने का, सेपरेट करने का. विल गेट द आंसर. सो आंसर इज 800. तो मैं कृष्ण एरिया अंडर ग्राफ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाने का मतलब ट्रेपेजियम है. ए वाला क्या है आपको? स्क्वायर है.
एरिया, दोनों ऐड करने का। मतलब ये वाला सब्ट्रैक्ट करो, ये वाला ऐड करो। क्या नेक्स्ट? Sir, which units? हम्म They need to convert the centimeter cube into meter cube. कन्वर्ट कर लो, पर ये कभी भी यूनिट्स ऑलवेज एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करने का, व्हाट आर यू वांट टू डू। So do we have to convert it? देखियो द गिवन दिस इज रॉन्ग किया ना। ये वाला प्रेशर एंड दिस इज वॉल्यूम द गिवन। दिस इज दे डायरेक्टली द गिवन द प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, नो नीड ऑफ कन्वर्शन, एंड वॉल्यूम इज मीटर क्यूब। नो नीड ऑफ कन्वर्शन, नो करो। So y-axis is pressure, x-axis is volume. He's saying to find the total work done from where to where? Sir, 850. 850. Okay, total work done. Question making it. Total work done from the gas from Sir, is that D E to E to and D to F. Sir, D to E and E to F. 1350. No, no, A वाला है. 1 second. Half into 900 D to into E and 3. E to F चाहिए. Sir, 450 into 3. 1350. देखेंगे अलग भी करने दो. Sir, I got only 450. देखेंगे. So there's Sir, F also. 450. हाँ, F also. 450 is Oh, answer. Yeah. आया? Done? Yeah. Yes. चलो. नाउ इंटरनल एनर्जी के बारे में लिटिल बिट आपको लर्न करना पड़ेगा, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आपको इंटरनल एनर्जी का टेल में व्हाट आर थिंग्स यू नो अबाउट इंटरनल एनर्जी के में टेल में इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? U इज इक्वल टू एन सी वी NCT. टी थी। डेल्टा यू फॉर्मूला क्या होगा? एन सी वी डेल्टा टी। कैपिटल है ना, कैपिटल वी आर यूजिंग, राइट? एंड वन मोर थिंग, सी वी फॉर्मूला क्या था? सी वी इज NFR by 2. F by 2R, Yeah. right? F is a degree of freedom. This is CP था इंटर एनर्जी के बारे में। एंड सम मोर पॉइंट्स लर्न करेंगे। इट इज ए इंटर एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन मींस पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन। इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। वेरी इंपॉर्टेंट वन, ये वाला न्यूमेरिकल्स में बहुत आएगा आपको। समटाइम्स दे विल गिव इंटर एनर्जी दिस पाथ फ्रॉम हियर टू हियर, दे विल गिव इंटर एनर्जी का। बट व्हेन यू आर डूइंग क्वेश्चंस में आपको ये चाहिए, सो वी कैन यूज दिस इंटर एनर्जी here also, this path mein, because it depends on only initial and final path only, not path function nahi hai, state function hai. So both direction mein aapko change in energy is same, that is called state function. Next one, u depends only on temperature, and u depend change in u depends only on delta T, right? And it is delta u in a closed cycle is 0. Why? Because closed cycle mein it is a state function, right? Delta T will be 0 in a Delta T closed will be cycle. 0. And computer. तो वेरी फेमस NCV डेल्टा T, NCV डेल्टा T बहुत काम आएगा आपको। ओके, नो सपोज मान लो आई वांट स्टेट फंक्शन के बारे में डेफिनेशन मालूम है आपको। ओके, जरूरत नहीं है आपको, मालूम है, राइट? इट इज पाथ इंडिपेंडेंट। नो, डेल्टा यू इन टर्म्स ऑफ पीवी में चाहिए, प्रेशर एंड वॉल्यूम में। क्या फॉर्मूला आएगा टेल में? डेल्टा यू इज इक्वल टू एन इंटू सी वी डेल्टा टी, राइट? एन इंटू एफ बाई टू आर into delta t, t2 minus t1,
So F by 2, if I take common, NR T2 P delta V. minus NR T1 Yeah, that's P delta by V. using ideal gas equation PV equal to nRT, right? So F by 2 is equal into P2 V2 minus P1 V1. This is a formula for delta U in terms of pressure and volume. Because आपको ग्राफ में PV ग्राफ will be given. That time find delta U बोल तो आपको ये फॉर्मूला एक ही से नहीं होगा, टेम्परेचर नहीं देगा. So pressure and volume में ये यूज करना पड़ेगा आपको. F by 2 into P2 V2 minus P1 V1. This is a formula for delta U. Done? चलो करो. They given a graph. The process is going from A to B. They're asking change in internal energy of the gas during the transition. I want delta U is how much in the transition. And they give it, you know, the P1 V1, you know, P2 V2, you know, because pressure and volume ka graph is given to you. But in the y-axis, you should check it is a kilopascals. Kilo means 10 power of 6, 10 power of 3 से multiply करने का, right? जो भी वैल्यू ले रहे हैं into 10 power of 3 करने का. I want answer in kilojoules. So, but won't I get a negative? Anything. No, mine shall get no. Wait. So minus 20. क्या देखें. Sir, how do I convert? 1 second. किलो मालूम है ना 10 cube. Sir, yeah, sir, minus 20. Yes, minus 20 is answer. Yes, I got it. What? Okay. Next. चलो. Now we'll take the sign conventions. आपको साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है बहुत, नहीं तो पूरा रॉन्ग हो जाएगा साइन कन्वेंशन लर्न नहीं किया तो. ओके, साइन कन्वेंशन क्या है? इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव. you always remember the piston and the tank का वो वाला इंपॉर्टेंट है. लाइक इंजेक्शन रहेगा ना वो वाला पिस्टन वाला. सो अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रहे बोलते यू शुड टेक एज पॉजिटिव. इफ यू आर डिक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी इट इज शुड टेक एज नेगेटिव. ओके चलो. Now we'll talk about the heat का. Can you go Heat back of- for 1 second? Okay, then never mind, got it. Okay, now heat का भी देखेंगे. Heat के बारे में tell me what are the things you know we studied last class में. Depends on the condition. It's either NCB delta T or NCP delta. NCV delta T or delta Q is equal to NCP delta T. Based on the process, the formula will change. Okay, and here CPCV already you know, and here also we have to know the sign conventions. Sign conventions क्या है? Heat given to the system is taken as positive, and heat given by the system is taken as negative. हम लोग जो दे रहे हैं heat, that we should take as positive, and heat given by the system मतलब वो दे रहे हैं that is negative. Got? Now Yeah. 3 variables you know already know. Okay, you understood now 3 variables properly. Now हो गया. चलो. Now first law of thermodynamics learn करेंगे. 3 variables done. We studied what are the things delta U, heat and work done. We know.
These three parameters का relationship only we have to know the first law. So first law क्या है? That heat given to the system is equal to sum of the increase in internal energy and work done. देखो, अगर मैं हीट डेल्टा क्यू हीट दिया टू सिस्टम, ओके, उसके वजह से गैस मॉलिक्यूल्स का इंक्रीज होगा, एनर्जी विल इंक्रीज, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा, सो इनिशियल टू फाइनल हो जाएगा, एंड वर्क इज डन बाय ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन बाय, सपोज एग्जांपल आई पिस्टन, पिस्टन क्या हो जाएगा मालूम है, व्हेन आई गिवन ए हीट क्या होगा, द पिस्टन विल मूव, राइट, दैट मींस इट इज द गैस इज डूइंग सम वर्क, दैट तीनों का रिलेशनशिप इज नथिंग बट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. सो व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सेज दैट delta q, what are the heat energy Equal to which is U plus giving, W. delta u plus w, this is the formula, delta u plus w. Okay, heat given to system, and you should know this sign convention. This delta q here is what, heat supplied to the system always. This is a standard one, the one which you are using in thermodynamics में delta q कौन सा यूज करना, heat supplied to the system. Suppose heat is given by the system बोल के वो लोग दिया तो you should take as minus बोल के लगाने का, okay, and work done by the system w, and delta u is nothing but increase in the internal energy of the system. This is the first law. That's why we studied three different parameters detailedly. First law के लिए ये तीनों parameters, you know now how to calculate work done, how to calculate delta u, how to calculate delta q. This is the first law of thermodynamics. I'm going to use with sign conventions. We have to use this formulas. When you're doing numericals में sign conventions sometimes नहीं मालूम है तो wrong हो जाएगा. Yeah, so done. Then delta q is equal to delta u plus w. Heat given, internal energy increase हो जाएगा, work is done by the piston. Okay, चलो. Now साइन कन्वेंशन मालूम है ना आपको, प्लस माइनस कब लगाने का, न्यूमेरिकल्स करेंगे बेस्ड ऑन दिस. फर्स्ट सिंपल थोड़ा जाएंगे बाद में. हाँ करो Sir, can you go back once? ये वाला. Thank you, sir. Yeah. Heat of 500 joules is applied to the gas and does 200 joules of work. Find the change in internal energy. Sir, 300. 300. 300. Yes. Next. Gas absorbs this much of heat and internal energy increase होगा. What done by the gas? 180. Sir, 420 minus 420. Sir, 1 second. या करो देखते हैं. Heat absorb कर रहा है, that's it. Heat is getting Sir, absorbed absorbed is by given the, to the system. That's 180. हाँ 180 joules is answer. Normally heat absorb कर रहा है ना, उसमें कुछ पॉजिटिव लेने का कुछ नहीं है. Next ये करो. An ideal gas absorbs this much of heat. Its temperature increases from this much to this much. And Cv he told 3/2 R ले लो बोल के बोला. N equal 1 is asking what done. Oh. In terms of R में चाहिए, that's it. Value answer. So 600 minus 150 R. So 600 minus 150 R. कितना फाइनल आंसर कितना? 450 आ रहा. So related negative. नहीं फाइनल आंसर बोलो. Sir, minus 645. देखने तो करना. Sir, R we should take as 8.3. नहीं R only. In terms of R में बोलो.
So then it should be 600 minus 150 R only, no? Okay, so 600, okay. Olia, that is minus 647 joules. So if you do 150 into 8.3. 8.3, you'll get 1245. Yeah, subtract किया तो approximately you'll get as minus 647 joules. Because sometimes 8.314, right? ऐसा रहेगा. Okay. Understood? चलो. Next. A gas undergoes a cyclic process and absorbs this much of heat. Find the net work done. 800. 800. Yes. Understood, right? Yeah. Micro. JEE Main question. A total of 48 joules heat is given to the 1 mole of gas, helium gas. The temperature of the helium increases by 2 degrees Celsius. What done by the gas? So 24 point something. I'll give options. You tell. JEE Main क्वेश्चन है, सिंसियरली करो. R 8.3 लेने का. So what done चाहिए? Use the first law of thermodynamics. So heat मालूम है. So delta U find करने separately and substitute and tell the answer. So the 2 degrees Celsius, I mean the delta T Delta T. will be 2 Yeah. degrees Celsius and 2 Kelvin will be the same only, right? Yes. So 23.1. देखिए. Delta U formula, you know, right? NCV delta T. And since helium is the monatomic gas, degree of freedom is 3, right? Yeah. कितना है? अच्छा. So 23.1 आया. 23.1 only. Yes, this is the answer. Next. At a rate of Nilika. At a rate of 1000 watts. If the system performs the work at a rate of 200 watts, the rate at which the internal energy will increase. मतलब the heat supply means dq by dt value is given. dq by dt value is given as 1000 watts. So 800. देखें. Yeah, sir, 800. Yes. मतलब see first law of the differential form में dq is equal to du plus dw, right? if differential dt से differential करूंगा in differential form में, correct. This is the rate of internal energy is given, in rate of work is given. Okay, 800 is answer. Next. I got to answer in kilojoules.
So from what temperature to what temperature is it heated? 100 grams, 30 to 50 degrees Celsius. Mistakes whatever. Heated from 30 degrees Celsius to 50 degrees Celsius. Ignoring the slight experiment, the change of internal energy will be how much? So can you give options once? नहीं options नहीं बोलो करो. So it, I want it in kilojoules. so 8.4. देखेंगे. 8.4, 84, 2.1, 4.2. 8.4, 8.4. You don't need kilojoules, right? हाँ kilojoules sir. Yeah, then 8.4. देखेंगे. So I'm getting 8.3. Yeah, approximate you can take. 8.4 is the answer. Yes, 8.4. Okay. Yes. Next करो. So I'm getting 66. So I'm getting only 6. देखेंगे. So delta uses state. Yeah, it's a state function. Yeah. So yeah, 666. 6 is the answer. Yeah, 6. Yeah. So but shouldn't total U be, so it should be minus 30 from one side and 30 from the other. So the total becomes 0. Final minus initial, right? So delta use a state function, right? इस तरफ and इस तरफ का same है. हाँ, arrows you're telling, huh? Control नहीं, कुछ नहीं. देखो, system is taken from initial to final state along the IAF. IAF में initially So IAF and IBF are or हाँ, so क्या होगा? Delta U same, right? delta use same. Yeah. Use it one. Okay. कुछ है आपको? Oh, but total should be 0, right? So one should be opposite of the other. Why total is 0? Because it's a cyclic system. पर साइक्लिक सिस्टम में ओके, बट ये साइक्लिक सिस्टम है क्या? साइक्लिक सिस्टम में एरो ऐसा सीधा रहने का. दिस वन प्रोसेस, दिस वन प्रोसेस. Okay. Sir, once can you tell it again? See, what is saying to find work done along the IBF. इसमें वर्क डन चाहिए, राइट? दिस पाथ में वर्क डन चाहिए. ओके, यू टेल मी, इसमें आपको क्या क्या मालूम है? टेल मी. So what is the formula? Tell me first of all. Q is Okay, equal okay, to okay. Sir, got it. So delta you find करो in this path में, in this path में use करो. That's it. Okay, sir. Got it, sir. Yeah. Next. करो.
The gas is taken from A to B in via two different paths, ACB process and ADB process. Sir, 40. देखेंगे Yeah, so 40. 40 is the answer. So yeah. Same question, same type of question, right? Delta U find करके we have to use that one. Gaseous mixture, very important. Gaseous mixture, इसमें भी आपको क्वेश्चंस आएगा एंड बहुत सारे क्वेश्चंस आर देयर आल्सो. गैसेस मिक्सचर, सो गैसेस मिक्सचर में फॉर्मुलास तो सेम ओनली, बट मिक्सचर में सपोज मान लो यू हैव two non-reacting gases are enclosed in a vessel of volume V. The mixture N1 volumes of one gas are there and N2 moles of other gas are there. In one container में दो gases are non-reacting gases are there, N1 moles and N2 moles are there. At that time में they will ask what is the CP mixture, CV mixture and gamma mixture, ऐसे पूछेगा. So फॉर्मूला कौन सा यूज करेगा, आता है बोलो. CV मिक्सचर का फॉर्मूला क्या है? N1 CV1 plus N2 CV2 by N1 plus N2. वेरी गुड. करो. N1 CV1 plus N2 CV2 by N1 plus N2. Similarly, CP mixture will be N1 CP1 plus N2 CP2. And gamma mixture will be CP by CV, right? CP by CV. If you divide, so ऊपर P आएगा, A P B आएगा. A N1 plus N2 cancel हो जाएगा. समझ में आया? Gamma will on right. Gamma is nothing but CP by CV. And CV mixture in terms of R and gamma में R by gamma minus 1. Gamma के जगह में mixture डालने का. Gamma mixture minus 1. And CP mixture will be gamma mixture R by gamma minus 1. And the Mayer's relation is always true. CP minus CV mixture also R only. Copy down formulas. So now you calculate gamma mix by just adding both the gammas. Gamma mixture. So then the CV mix is R by gamma mix minus 1, right? Gamma mixture calculate करके सब करने का. Yeah, so for calculating gamma mix, we just need to add both the gammas, right? Yes. मतलब गामा दोनों वैल्यूज देते हो, यू कैन यूज, बट जनरली दे विल गिव दिस वन. गामा मिक्सचर फाइंड करके देन सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. N1 CP1 plus N2 CP2 by N1 C1 plus N2 C2. And you know फॉर्मूला तो सेम है. CP1 CP2 फॉर्मूला मालूम है ना. नॉर्मल इंडिविजुअल यू कैन कैलकुलेट, राइट. CP का फॉर्मूला क्या होगा इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम में? Sir, what? CP का फॉर्मूला फॉर इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम में F by 2 plus 1 F by into 2 R. R plus R. F by 2 R is nothing but CV. F by 2 Yeah, plus yes, 1 R. into Oh, R. F by 2 R plus R, yeah. F by 2 plus 1 times of R. ओके चलो यूज करेंगे. करो. A mixture contains 2 moles of monatomic gas and 3 moles of diatomic gas. Two different gases are there in one container. He's asking CV mixture and CP mixture is how much? कैपिटल सी है, मोलार के बारे में बात कर रहा है. सो इधर CV1 CV2 सेपरेट सेपरेटली कैलकुलेट करो, देन सब्स्टिट्यूट करने का फॉर्मूला. मोल्स तो मालूम है ना. सिमिलरली CP1 CP2 सेपरेट So सेपरेट if फाइंड. CV can be used CP minus CV equal to R. एक गैस का डिफरेंट है ना, अगेन दो डिफरेंट डिफरेंट गैस है ना. सो पहले सेपरेट सेपरेट कैलकुलेट करो. एंड CV1 CV2 सेपरेट कैलकुलेट करो.
I got CV as In terms of R में 2.1 है. hour and CP as 3.1 hour. CPS Yeah. 3.1 आ रहा. No wrong. Fraction में बोल लो. Fraction में. 31/10. Wrong. CV1 CV2 फाइंड करो पहले. CV1 how much you got? So CV I got 21/10. Wrong. फॉर्मूला यूज करो. मोनोएटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3, राइट? CV1 का यूज करो. F/2R. So 3/2R is CV1. CV2 is डायटोमिक का कितना होगा? 5/2R. फॉर्मूला मालूम है ना? CV मिक्सचर का फॉर्मूला देखो. दिस वन N1 CV1 प्लस N2 CV2. ये डायटोमिक गैस का फॉर्मूला लगाने का, ये मोनोटोमिक गैस का लगाने का. मोल स्मॉल में जस्ट सब्स्टिट्यूट. Sir, 2.1 is CV1. X. फ्रैक्शन में बोलो. 21/10. 21/10 ना? रॉन्ग. CV1 is how much? See, Sir, CV1 is 3/. 3/2R. And CV2 is how much? CV2 is diatomic का. Sir, got it. 1 minute. हाँ. Sir, 17.4. मानो कितना है? One second. ऑन द वीडियो सेंट्रल. Sir, CV is 17.4. Wrong. CV1 is how much? मोनो का CV1 बोलते हैं. Yeah, I And got डाया का CV2. if I leave it in terms of R, I got CVS 2.1 R and CPS 3.1 R. CV1 is फ्रैक्शन में बोलो भाई. और टेकिंग एलसीएम Fraction लेने is इजी हो जाए. 3/2R. हाँ, 3/2R फिक्स्ड. ये फिक्स कर दो. हाँ, एंड CV2 का डायटोमिक का. 5/2R. हाँ, वो दोनों लेके फॉर्मूला ये यूज करके बोलो फर्स्ट Yeah, आंसर. so 2 into 3/2 R plus 3 into 5/2 R divided by 2 plus 3. हाउ मच दैट इज फ्रैक्शन में कितना है? 21 R by 10. 21R/10. Yeah, चेक पकड़ प्रॉपर्ली. but I'm checking properly, sir. I checked twice. Sir, 2 sir, 2 21R by कैंसिल. 10 only. Yeah, sir, हाँ, 2 to cancel. And then you'll get 3R plus 3R. 15R by 2 divided by 5. So if you take LCM of the numerator, you'll get 21R by 10. एक काम करेंगे, आंसर देखेंगे. देखो ये कटर होगा. देखो हियर 3R Yeah. प्लस Plus 15R by 2. 15/2. ओके, सो एलसीएम ले तो Yeah, 6 21R by 10. So 21R by 2 divided by 5 is there, right? हाँ 10. या Yeah, so 2.1R. या ठीक है. And then CP will be 1 plus that. So या 3.1R. ये आया ना? कैलकुलेशन चेक किया होगा देखो. ठीक है, नेक्स्ट आया. आ गया. नेक्स्ट. Yeah. चलो. 1 mixture of 1 mole of helium and 1 mole of oxygen, मतलब mono dia is heated. CV mixture. Sir, it's 3/2 plus 5/2 by 2. That's what 8/4. So 2R. देखेंगे कोई करने दो. This is a 2R. Yes, 2R is answer. आया क्वेश्चन. N1 CV1 plus N2 CV2 by N1 plus N2. For a gaseous mixture, gamma mixture is given to you.
सीवी मिक्सचर चाहिए, सीवी मिक्सचर चाहिए. Okay. Sig, oh, सीवी यू नो 3 राइट R इन 4 टर्म्स R. ऑफ, देखेंगे. वी नो सीवी इन टर्म्स ऑफ गामा, वो फॉर्मूला यूज करो. आया कितना है पूछा? How much you got? 3R and 4R. Yes, cut. Now CB mixture is given. Gamma mixture is given. I want CV mixture. Sir, in terms of R, R only. Yeah. sir, 3 by 2R. Wrong. Sir, why do we need CP mixture? अरे गामा का फॉर्मूला क्या है? So Sir, this is gamma 3 is R. given, no? Gamma is that only gamma formula. Basic formula is what? Gamma is 3 CP by R, no? CV. CP by 3 R CV. is answer. हाँ, CP by CV. Divide करो. CP is given it. CV कितना आएगा? See, gamma is nothing but CP by CV. So 3 R, right? 3 R is answer. 3 CV के लिए CP by gamma. समझ आ रहा है? Sir, what if you So this do is R by gamma mixture minus 1? which one you are using? CV, yeah? R by gamma mixture minus 1. करो एक बार. But in terms Yeah, of so she's right. But if you do that, you'll get 3 R by 2. 3 by 2 by because they given CP terms पे right, so वो यूज करना पड़ेगा. उसका Sir, उसका but you're प्रोसेस में supposed चेंज to नहीं get same answer, no, sir. होगा. या ठीक है. आंसर इज 3 R इज आंसर. या नेक्स्ट. A gaseous mixture as CV mixture is given, gamma mixture is asking. No, CP is not given now in this. CP find करना Sir, you पड़ेगा. can do plus R. हाँ, So you'll get yes. Mayors 3.5 question. 2.5. So fraction में कितना आंसर? 7 by 5. Correct. 7 by So I 5 is got answer. 1 by 2.5 plus 1. Wait, 7 by 5, yeah. 7 by 5 is answer. Because Mayer's relationship always holds good, right? CP minus CV is equal to R. So plus R करने का, that's it. Okay. So these are the things. Next class में हम लोग क्या करने वाला है? ये प्रोसेस, थर्मल प्रोसेस किया तो आपको पूरा चैप्टर हो जाएगा. सो मैक्सिमम 1 क्लास फास्ट में किया तो हो जाएगा, नहीं तो 2 more classes लगेगा फॉर अस टू कंप्लीट द थिंग्स. ओके. एंड थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस इजी, राइट? आपको मालूम है ना? Yes, sir, we did the same in chem.